It's close. Shout for LBW, and he's got him. First over, the quicker ball, the arm ball, and Travis Dean in front for a duck. And the Cricket Australia 11 lose their first wicket. Travis Dean out for no score, 1 for none. Just going straight back, sort of plump in front. Even in a review situation, you wouldn't be calling for a review on that one. Wow. That will change the landscape of the city of Brisbane dramatically. And there's a play and a miss. It's hit the keeper on the shoulder. And now he's been given out LBW. The umpire took a while. Exactly. The bowler just thought it was a fait accompli. The keeper got hit in the shoulder by the ball. At the end of the day, Sam Raphael is out. LBW to Wazim for 4, and they lose their second wicket here. The CA11 with just 8 on the board. Well, that was a bizarre dismissal. The Pakistanis just thought it was a fait accompli. As we watched the replay. Well, I don't know what it was going to miss. The bowler just, I don't know whether he'd given up or not. He appeals and then bowled him, played it on, just looking for that little dab that you so often see. It either goes for a single or play it on, and this time it was played on, and Bazisto is out for 3, and they lose another wicket, the Cricket Australia 11. The skipper's gone, and it's 3 for 19. Hassan Ali picks up his first wicket, as we'll see in the replay, where went to just run it down through the gully area, but just catching the bottom edge more than the centre of the bat. Played it straight on. Came in off the pitch as well and just cramped him for room, and just one of those shots that all he was going to get was one, and all he succeeded in doing a bit of movement back off the seam, and well bowled. Lynn, now he's been called up into the Australian ODI team. Short and top edge, and there's a catch. Pakistan, their fielding has improved. That was a terrific catch. And is that Baba Azam that's taken the catch? He was diving away from us. It was hard to tell. I don't think it was. I think it might have been. It was very much a Superman dive because he just launched himself. Terrific catch. Running away, not quite out of the middle. In fact, it was off the toe there from Pekovsky, who's out for 10. And that was an outstanding catch. We've spoken about whether their fielding would have improved. Well, on that effort, yes. Now we see it. We've just seen the 12th man come running on from off the field just to give him a big pat. We'll see the replay of that catch. And it is, in fact, Asad Shafiq that took the catch. But literally as he dived with the flight of the ball. And that was what was so amazing about it. Often you see people dive towards the ball or perpendicular to it, but to dive with the ball was an unbelievable effort. So a nice little catch there. Just got onto him a little bit quick to play that pull shot, and Asad Shafiq, the ball held up in the breeze as well. Just a quick check in. Yes, there has been. Inglis has hit a couple of fours. It's going to be caught. Sanger in the air, straight down the throat of the fielder, and that's a pretty poor shot when you consider he'd been playing so well. Umar Akmal didn't have to move. He was underneath it. In fact, it was Shahjil Khan out there on the boundary. Which is why he didn't move. And the innings of Sanger comes to an end on 20, and the 50 partnership wasn't reached. Very unfortunate. Nice little catch out there on mid-wicket, but hit pretty well straight to him. Yeah, it was a catching practice drill. Half-tracker too. He could have put it anywhere really, and unfortunately put it straight down the throat of Shahjil Khan. There's the new bowled him straight through the arm ball, played inside it, maybe expecting a little bit of turn, and just clipped the stumps. And so Hinchliffe is out for 4, and they lose their 6th wicket
with the total on 95. Hinchcliffe bowled Shad Malik for 4. Inglis remains not at 52. Paying the price of nudging more than anything, just caught on that crease line, neither forward nor back. It's been the way for the batsmen that have been dismissed as well. The LBWs early, very similar shots. Out of the over for Azhar. And did that hit the pad? Big appeal, and he's given him out, LBW. Another LBW, and this time it is the big wicket of Josh Inglis. It is the third LBW of the innings, and Azhar Ali gets his man. LBW for 70, and it's 7 for 118. Unlucky for Josh Inglis. Certainly deserved a century today, the way he batted. Just went forward again. Just started in. I think that was more a wrong one again. Just Inglis played for it, but it went inside him. Caught him right in front. The umpire, without hesitation, put him out. And he's out LBW to the bowling of Azhar Ali for 70. Came up off 64 deliveries. It's in the air. Who wants it? Azhar Ali is under it and takes the catch. He couldn't resist in the end, Sutherland. He played quite a few defensive shots, and then the ball was just tossed up and he hit it high in the air. And looking into the sun, the captain took a good catch, and Sutherland is on his way out for 9. That's the 8th wicket falling, 8 for 126, the Cricket Australia 11. They did cross, so the new batsman, Henry Thornton, will be at the non-strikers end. Wasn't a bad catch in the end, looking into the sun, and other fielders around as well. The umpire there also. I think square leg for a moment thought he was a bit of a chance too, but thankfully held off. Rahat Ali bowled in straight through, well pitched up, and the innings of Henry Thornton comes to an end. Straight through the defence, and Cricket Australia 11 now 9 down. A nice Yorker length delivery there. Batter just not quick enough to get down on the ball. Comes in underneath, takes that off stump. Nice delivery there from the left-handed Rahat Ali. A little bit of in-swing too against the breeze. But as well bowled. Riley Meredith, the final batter for Cricket Australia 11. That was the end of that 34th over. And 8 for 100 and 9 for 1. In comes Hassan Ali. Short, straight to deep mid-wicket, and there's the final wicket to fall. Straight down the throat once again of Shahjeel Khan. And the match comes to an end with the final wicket of Green falling for 8, and the total 138. So a comfortable 197-run victory for Pakistan in this tour match. Terrific 98 from the captain, Azhar Ali, for Pakistan. I should say Baba scored the 98. The captain made one not out. And then for the Cricket Australia 11, 70 for Josh Inglis. So they'll be pleased to get a win under their belt, Pakistan. They did some good things today. And now... Doc, how are you? That's a big question. You want the Dil I'm fine. I know. I'm absolutely fine. So, मैंने ये लगाया है अपना जो मैंने कोरिलेट करना मैं ये चाह रहा था कि one man can make a difference. Yeah, of course. वो mindset change कर सकता है, वो legacy छोड़ सकता है, वो आपकी philosophy change कर सकता है, सोचने का. Although it's a team sport, yes, but one individual can change the course of the game by his brilliance. और जिस तरीके से हम जब चेस करने गए हैं, obviously शुरू में थोड़े shaky थे, because ये बड़ा it's one of those totals, especially for Pakistan team,
240-50 तक तो ठीक है, वो पता है कि क्या करना है। 220 में आप फंस जाते हो, रोकू के मारू। वी सॉ असद शफीक इन बिटवीन कि वो फंस गया था, उससे सिंगल भी नहीं थी हो रही। वो मुझे जो लग रहा था देखते हुए मैच के, वो बिल्कुल बौखला गया था। दैट्स द वर्ड एग्जैक्टली, डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, एंड दैट्स वेयर I think Shoaib Malik really played well. I've been saying all along, he's one of the top players in Pakistan cricket. Experience है, situation को read अच्छा करता है, और plus is still one of the best fielders in Pakistan's side. So it's good to see getting runs after his illness. And I reckon it was a very good win. We started off well again. Heartening. हफीज की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उसने कप्तानी की। 78 पे ये भी 4 आउट थे, 86 पे 4 आउट थे, 126 पे 5 आउट थे, मगर वो विकेट लेने गया। उसने जनरली लगा कि वो विकेट लेने गया, उसने ये परवाह नहीं की कि आखिरी 4-5 ओवरों में क्या होगा। उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने 221 पे आउट कर लिया। ओके। और जी, जब हम बात करते हैं वसीम अकरम की, तो ये जितने भी बैठे होते हैं हमारे, और जितने आते हैं और चले जाते हैं, वो क्रिकेट जो खेले इनके साथ, वो भी ये टेस्टिफाई करते हैं कि ही वाज द वन हु एनकरेज्ड देम और क्रिकेट सिखाई। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और आपको शायद समझ आ रही होगी कि वन मैन कुड मेक अ डिफरेंस। 5 साल अगर आपने कप्तानी की हो तो माइंडसेट्स कैसे चेंज होते हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान कैसे ठीक ठाक। आज इंट्रो बहुत छोटा था आपका माशाल्लाह से। आज मुझे वैसे ही वसीम भाई, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे वसीम भाई याद आ रहे थे। ठीक है, नहीं बात आपने अच्छी की कि वैसे कहावत है कि एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ये कोई नहीं बताता। बिल्कुल ठीक है। बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कप्तानी का। ये नहीं है कि हफीज आया और जीत गए, ऐसा नहीं है। उसने कप्तानी की, दिखाया है। वो खुद भी जब बॉल कर रहा था, उसने एक शॉर्ट लेग भी ली, एक लेग गली भी ली, एक स्लिप भी ली हुई थी। ये मिसिंग था हमारी टीम में, ठीक है, आउट करने के। जैसे वसीम भाई ने ये बोला है कि आखिरी 5 ओवर नहीं देखे कौन करेगा, आउट करो इनको। जब विकेटों पे विकेटें गिरी तो ऑटोमेटिकली जो भी बॉल करेगा उसको रन नहीं बनेंगे। तो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन हफीज नो डाउट अंडर प्रेशर, हम खुद ये बोल रहे थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया, गया खेलने, क्या परफॉर्म कर पाएगा, बॉलिंग वो क्वालिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन उसने प्रूव किया। ठीक है, मफरूजों पे हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं। हमने जुनैद खान के बारे में भी सुनते हुए देखा लोगों के, यार बॉल नहीं पहुंच रहा विकेट तक, तो वो एक अल्फाज होता है जो घुमा दिया जाता है, लेकिन बॉल तो पहुंच रहा है उसका, ठीक ठाक पहुंचा। तो ये चीजें होती है कि किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, तो ये बात कर दो, वो चल रही होती है, सर्कुलेट कर जाती है। लेकिन एनीवे अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की, स्पेशली हफीज की और जुनैद खान की, कि दोनों कमबैक करते काफी अरसे के बाद। तो फिर इधर क्रेडिट दें ना अजहर अली को कि उन्होंने किस तरह लड़ के बुलवाया। कप्तानी देखे, आज सुबह भी यही बात की थी, कप्तानी चाहे मिसबान ने बड़ी परफॉर्मेंस है या अजहर अली की भी है, इन तीनों में कबीले का सरदार हफीज ही है। परफॉर्मेंस वाइज भी और नहीं, कप्तानी नजर आती है, नजर आती है। बाकी वसीम भाई बताएंगे। और ये मोहम्मद वसीम है जी, और इधर हमारे हीरो शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है। अब उन्होंने कह दिया कि आप वसीम के पास जाएं। जनाब वसीम, आप वैसे कोई इतने बड़े फैन नहीं है मोहम्मद हफीज के, और आपके जो दोस्त हैं आज हो गए सुने, और आपके जो दोस्त हैं हारून, वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ सर डॉन आए थे, यहाँ सर हफीज आए, आज फिर वो खुश है। बिल्कुल, देखिए क्रेडिट जाता है, हफीज को भी जाता है, लेकिन अगर माइंडसेट की हम बात करते हैं तो बॉलिंग में भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि वो अग्रेसिव माइंडसेट नजर नहीं आ रहा था। तो मैं हमें जुनैद खान को भी क्रेडिट जाता है कि माइंडसेट उसने चेंज किया, ठीक, जिस तरह उसने शुरू में बॉलिंग की है, जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज इंस्पायर किया बाकी बॉलर्स को भी उसने। लेकिन हफीज को फुल क्रेडिट जाता है, कैलकुलेशन की जबरदस्त थी, जिस तरह बॉलर्स को उसने यूटिलाइज किया, बाकी फील्ड प्लेसमेंट्स उसकी जबरदस्त थी। और ये क्रेडिट उसको देना पड़ेगा कि दिमाग तो उसका है, क्रिकेटिंग ब्रेन तो उसके पास है, और आज उसको मौका भी मिला। और लकीली आज लक भी पाकिस्तान के साथ काफी चली, कंडीशन भी सूट की पाकिस्तान को कि जो बॉलर आया उसने अच्छे बॉल किए, जगह पे बॉल किए। और ओवरऑल देखें तो हमने सिर्फ 17 चौके कंसीड किए और 25 चौके मारे, और वनडे क्रिकेट आप ऐसे ही जीतते हैं। ओह दैट्स ग्रेट जी। शोएब भाई जनाब, आप तो वैसे ही माइंडसेट के बड़े खिलाफ रहे हैं इन 5 सालों में, तो हाउ डू यू सी, कोई प्लेजेंट चेंज नजर आती है? कुछ ऐसे लगता है कि हो सकता है कि हफीज स्टॉप गैप अरेंजमेंट बन जाए पाकिस्तान का फॉर कैप्टनिंग इन वनडे इंटरनेशनल्स? देखो यार, दो चीजें, स्ट्रोक ऑफ लक, एक जिस हालात से गुजरा है, बॉलिंग एक्शन से मैं भी गुजर गया, ठीक, वहां से करियर इसका ऑलमोस्ट एंड की तरफ चला गया, वहां से निकला, क्लियर हुआ, देन ही ड्रॉप्ड हुआ, फिर उसके बाद टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब ये आया विद स्ट्रोक ऑफ लक, बट ही मेड श्योर दैट ही परफॉर्म्स, ही डिड दैट, ठीक हो गया, ही डिड दैट, बट
एट द सेम टाइम आप ये देखें कि टॉस जीत के ओवर कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलियन टीम ने चूज टू बैट फर्स्ट। ठीक है, बैड मिस्टेक, ओके, विकेट फ्लैट हुई है और इस पे शॉट्स ऑफर हुए हैं और पाकिस्तानी बैट्समैनों की मैं बात करूंगा तो कुछ पॉइंट बना के आया हूँ, आज काम किया है बड़ा टाइम से तेरे आपका पॉइंट हमें मिल गया है, मुझे दिखाया भी नहीं जो मैं ही बोलूंगा। एंज करके उसी में ऐसे पॉइंट्स बनाए नकल ना हो जाए। बट आई थिंक ये फेवर पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के फेवर में गई टॉस। ऑस्ट्रेलिया जो नहीं समझ रहा है ये 50 ओवर की गेम है, ये T20 नहीं है। मिचेल मार्श चौथे नंबर पर बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग ऑलराउंडर से आप नहीं जीत सकते, प्लस एट द सेम टाइम इनके पास अच्छा स्पिनर नहीं है। आज हफीज ने 2 स्वीपें मारी, उसने गिटे पे अपना बॉल मार दिया उसने क्या नाम है इसका, हेड ने, तो उसने गिटे पे बॉल मारा है, ना उसका बाहर निकल रहा है, ना ट्रेविस हेड का, ना उसका बाहर निकलना अंदर आ रहा है, एक ही स्लीप लगी है इसको, प्लस उसने कट मारी है। और आई थिंक पाकिस्तान हैज पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। जुनैद खान का पॉजिटिव बहुत ज्यादा था, शूज का ट्रबल हो रहा था, थोड़ा स्लोप के कमेंटेटर से बात करें, स्लोप की प्रॉब्लम हो रही है, लाइटर शूज पहना है और इसका एक्शन कंप्लीट होना शुरू हुआ तो बॉल बाहर निकलना शुरू हुआ, जो भी आउट किया सिंधु बाहर पे किया। ख्वाजा लुक्ड इन a hurry, but Warner looked very ordinary to me when it comes to technique, when it comes to playing a fourth line delivery। यार मैं 2 मैचों में बड़े गौर से देखा है, ये सिर्फ अपने को बॉलर को डराता है कि आगे बॉल ना करा मारूंगा जोर से, हालांकि ये सिर्फ की टेक्निक यही है कि आगे से छक्का मार दूंगा। 2 मैचेस में 8 ओवर उसको आगे हुए हैं। हालत आप देख लें, वो पिच सूंघ रहा था, आज देख नहीं रहा था सूंघने से कुछ नहीं होता भाई। वी कैन सी द प्रेशर ऑफ द बैट्समैन कि वो आज पिच देख रहा है, ये कर रहा है, हालांकि जिसके बैट्समैन की टेक्निक है ना कुछ है, ये मार धाड़ करता है, T20 से बेहतर, T20 से प्लेयर, ठीक है, बट ये लुक बॉग डाउन टू मी। And at the same time, I don't think it's the depth of the batting is there of Australian team. इसी में बस करूँ, मेरा पॉइंट आ गया। यार आप स्टीव स्मिथ को माफ कर दें। डॉक बात डेविड वार्नर की, उसने अपना मेथड, अपना गेम को चेंज किया है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आउट स्विंग को आराम से खेलता रहे, छोड़ता रहे, स्लैश ही करना पड़ता है। और अगले मैच में मेरे ख्याल से ट्राई करेगा, आउट ओवर है वैसे ही, जिस तरह का प्लेयर है वो उसको जेब नहीं दे रहा, जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, बैट्समैन है। क्योंकि जुनैद का बड़ा अच्छा निप थ्रू करता है, सिंबे बेहतर मुझसे बता सकते हैं। वो आगे से उसको बॉल, उसका एट टाइम्स का बॉल लग के आमिर और इसका दोनों जब वैक्सीन कंप्लीट नहीं होते ना, आउटस्विंग के लिए जाते हैं, रख के एकदम ठग निप कर जाता अंदर। वो उससे परेशान है कि यार मैं चलाई ना, ये आउटस्विंग ना और सीधा रह गया था, डंडा ना उड़ जाए। वो डबल माइंड हुआ और बड़ी ऑर्डिनरी ऑस्ट्रेलियन टीम है बाय द वे। लेकिन आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं स्टीव स्मिथ के साथ। क्यों ज्यादा कर रहे हैं? उन्होंने जॉश हेजलवुड ने खिलाया था, नाल उस्मान ख्वाजा, आज फिर क्या छाड़ते हैं, T20 कह दिया, अब उन्हें ख्वाजा भी खिलाता है, उन तो फिर मुसीबत आती है। चौथे पे मिचेल मार्श नहीं आ सकता भाई। ठीक है सर, चौथे पे मिचेल मार्श नहीं आता। प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन टीम इज द बॉलिंग, जहां पे स्टार्की बॉय इज नॉट गेटिंग द विकेट्स अर्ली ऑन, एंड सेकेंडली आप जब स्टार्क को खेल लेते हैं, कमिंस को खेल लेते हैं, अब मलक तैयार बैठा हुआ था कि मार्शी भाई आएंगे। मार्श भाई ने पहला कीता बॉल एंज करके इतना कीता है, तो वो इतने आराम से उसने वो मारी कट था, फिर उसने कहा मैं आगे जोर लगाऊं, ठा सीधा चौका। मगर प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलियन की जो कप्तानी भी देखी है हमने, वो उसने भी अपने मेन बॉलर से, क्योंकि उसने आउट करना था। हाँ जी, उसने आउट करना था पाकिस्तान टीम को। 50 ओवर पाकिस्तान टीम खेलती तो जीत जाती, जितना टोटल था, इसलिए अपने मेन बॉलर्स के तीनों के 10-10 ओवर पहले खत्म करा दिए थे। ही वांटेड विकेट्स, सो दैट्स अगेन अ लर्निंग कर्व फॉर अजहर। अगर दोबारा वो खेलता है ये सीरीज में बिकॉज ऑफ हिज इंजरी एंड ऑल। हफीज डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग टुडे, जो अजहर नहीं कर पाया पहले मैच में। सो इस जीत से, जैसे शोएब ने कहा है कि अब पाकिस्तान टीम को पता लगना चाहिए कि ये टीम वीक है, हम ऊपर से 2 इनके आउट कर लेंगे, इनको पकड़ लेंगे। अब ये बेस्ट चांस है उनके पास ये सीरीज जीतने का ऑस्ट्रेलिया से, जो कि बड़ा लिटरली इम्पॉसिबल टास्क है ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। दे विल कम बैक हार्ड इन द नेक्स्ट गेम, जो आई थिंक 19 तारीख को है मेरे ख्याल में अगला मैच। और ये देखें कि कप्तानी की थोड़ा सा झलक दिखा दूं इनकी, कि अमूमन 41 से 50 ओवर तक फास्ट बॉल करते हैं, लेकिन काफी देर 44 ओवर तक स्पिनर्स ने बॉल किया है, 45 ओवर तक की है, और 42वें ओवर में स्मिथ आउट हुआ है और 43 ओवर में वेद। ये देखें 7-8 ओवर बाकी थे, ये दोनों विकेट नहीं मिलते, दोनों स्पिनर्स थे, एक इमाद ने आउट किया, एक शोएब मलिक ने आउट किया। ठीक हो गया।